After getting the knowledge about what are conductors and insulators, what is an electric bulb, and what is the difference between an ordinary electric bulb and the bulb which is used in the torch, and about electric current, electric circuit, and electric switch. Now we are ready here to discuss about how an electric torch works and what is there inside it. I left over this topic for you to discuss at last because in the structure and working of an electric torch, all these things which we have previously discussed in this chapter are required to explain, and that's why all were done by us earlier, and now this is the time to discuss about the structure and function, or you can say working of an electric torch. I'm ready here to deliver part 7 of chapter 11 named Electric Currents and Circuits. Good morning, dear students. How are you all? Ready to learn science with me? Let's go. Here I have changed the topic electric cells that is given at page number 171 to electric torch because the text given at page number 171 is all about an electric torch, and we are going to discuss about the structure and function of an electric torch. Think about the situation if you and your brother or sister are sitting with your father and playing a game of chess, and suddenly electricity supply has gone. What you will do there? You will search about an alternative of light energy, mean electricity supply. And what will come in your mind? Definitely an electric torch. But are you curious to know about how this electric torch works? How it is able to produce light energy? So, here a story is given in our book also, and I'm going to read this text given there. One day after dinner, Rohit and Reena were playing a game of chess with their father. Suddenly, the electricity supply went off. The father took out an electric torch from the nearby drawer and switched it on. There was some light in the room and they could find their way. The children were excited and wanted to know how the electric torch works. When the electric supply was restored, their father asked them to look at the parts of the electric torch. Aren't you interested, like Rohit and Reena, to know these details? Now, look at the diagram given here, and you will find that this torch, electric torch, is made up of three main parts. Are you watching? An electric bulb, number one. Number two, an electric cell or combination of cell. So here is the combination of cell, not a cell is there. एक cell नहीं है, there are two cell. It means we are using battery so that we can increase the intensity of light energy. A battery is used in this torch because two cells are there, and after that you can see an arrangement for housing these electric cells. Means there is a space to put the electric cells in the torch there. And the third one is an on off switch at the top. You can see the slide switch is written there. So let's closely observed all the labeling. First of all, left hand side, the front one, lamp filament, means the
फिलामेंट ऑफ द बल्ब, बल्ब के लिए लैम्प वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, a reflector. What is this reflector? Actually, this is a type of aluminium strip which is behaving as concave mirror. And what is the function of this reflector? ये बल्ब जो सारी लाइट प्रोड्यूस करता है उसे इकट्ठी करके और एक जगह पे फोकस कर देता है जहाँ पे हमें चीज़ देखनी है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर देयर। एंड एक जो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली द ग्लास कवरिंग विच प्रोटेक्ट द बल्ब फ्रॉम डैमेजिंग देयर। उसके बाद बॉटम में राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं तो लैम्प कॉन्टैक्ट इज देयर। दिस इज वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द टॉर्च बल्ब विच इज अटैच्ड टू द इलेक्ट्रिक सेल। आपको पता है ना, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के दो टर्मिनल होते हैं और दोनों को हमें जोड़ना होता है। तो यहाँ पे बल्ब के एक टर्मिनल को हमने इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से जोड़ दिया। इसके बाद जब हम राइट हैंड साइड में देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दैट इज़ कॉल्ड द बैटरी। तो दो सेल डाल दी, यहाँ पे बैटरी बन गई हमारी। बैक में जाए तो मेटल स्प्रिंग इज देयर, यानी कि आपकी बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो मेटल स्प्रिंग से जोड़ दिया गया है। एंड दिस मेटल स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ मेटलिक स्ट्रिप, आप देखोगे आगे जाके इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि टॉर्च में यूज किया है उसके दूसरे टर्मिनल से जाके जुड़ गया है। एंड बीच में एक स्लाइड स्विच की मदद से इस मेटल स्ट्रिप को डिसकंटिन्यू एंड कंटिन्यू करने का ऑप्शन हमने रख दिया। हम जब चाहें तो इसका कनेक्शन करवा सकते हैं, जब चाहे तो बंद कर सकते हैं। एंड ऊपर है एक प्लास्टिक केसिंग, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक केसिंग। टॉर्च को आप देखते हो अलग अलग कलर की होती है, तो ये प्लास्टिक केसिंग सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखती है। एंड लास्ट में सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड इज़ द सीलिंग रिंग दैट इज़ वाटर रेजिस्टेंट, ताकि आपकी टॉर्च में पानी ना घुसे। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। अब आ जाओ देखते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। स्लाइड स्विच पे पहुंच जाओ। व्हेन वी स्लाइड और प्रेस, दो तरह के होते हैं, या तो प्रेसिंग स्विच होते हैं, हम दबा दें नीचे तो ऑन हो जाएंगे जैसे हमारे घरों में होते हैं, या फिर वो आगे की तरफ स्लाइड करते हैं हम ऑन करने के लिए। सो व्हेन वी स्लाइड और प्रेस द स्विच ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट फ्लोइंग। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सेल टू द बल्ब। इलेक्ट्रिक सेल से जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल एनर्जी जो भरी हुई है, क्योंकि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। आप देखो बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से फिर एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल, दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल मेटलिक स्ट्रिप के साथ, एंड मेटलिक स्ट्रिप दूसरे टर्मिनल के साथ बल्ब के। इस तरह से एक पूरा क्लोज्ड सर्किट बन जाता है। जैसे ही स्विच ऑन करते ही क्लोज सर्किट बनता है, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो केमिकल भरे हुए हैं वो उनमें रिएक्शन होती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेटलिक स्ट्रिप जो कि कनेक्टिंग वायर का काम करती है, फिलामेंट तक पहुंचती है, फिलामेंट अपने आप को हीटअप कर लेता है एंड हीटअप होते ही ग्लो करने लगता है। एंड दिस ग्लोइंग ऑफ फिलामेंट is responsible to produce the light energy. Now let's correlate our explanation with the text given in our book. He's saying when we slide or press the switch of an electric torch, electricity start flowing from the electric cells to the electric bulb, and this flow is through thin metallic strip which acts as the connecting wire. And this flow of electric current heats up the filament of the bulb, and the bulb therefore lights up. In this way, an electric torch works.
If you want to know about the structure and working of an electric torch further, you can purchase a toy torch which is available in the stationery shops in the form of key ring. So you can purchase that key ring in the form of torch there. You can open it and see all the three parts of that torch, and you, by pressing the button, how it is working there. Easily available at the stationery shop and easily operatable, openable. आप खोल भी सकते हो, बंद भी कर सकते हो, इसके पार्ट्स देख सकते हो, इसकी वर्किंग देख सकते हो. Now I want to explain you a do you know given at page number 171. As you are watching one of the part of your electric torch, that is reflector. ये एक concave mirror है, and what is given in do you know, the electric bulb in a torch is kept at the focus of a concave mirror. कनकेव मिरर के ठीक सेंटर में आपका बल्ब प्लेस किया जाता है, एंड दिस एक्ट्स एज रिफ्लेक्टर दैट सेंड्स आउट द लाइट एज अ पैरेलल बीम. The part of the bulb's light that would have gone back and got wasted otherwise thus becomes available to us. We can understand this in this way that what is the work of reflector. रिफ्लेक्टर का काम क्या है यहाँ पे, जो बल्ब ने चारों तरफ लाइट एनर्जी फैलाई है उसको वो इकट्ठा करता है एंड एक पैरेलल बीम बना के फोकस करवा देता है और हम वहाँ चीज़ों को अच्छी तरह देख पाते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द डू यू नो गिवन देयर डियर स्टूडेंट्स. नाउ समथिंग इज़ देयर फ्रॉम माई साइड, and that is how beautifully all the parts in an electrical device work together to continue the working of device, and hence we are benefited every time. So thank you for joining me. I will meet you on the other side. Have a good day.